welcome to My India, a show that brings the latest updates about India's rich culture, ethnic diversity and growing economy. I'm your host Abha. India's diversity is best reflected in its fairs and festivals. People living in the northeastern hills of Manipur have begun sowing new crops, and they celebrate the occasion with a seed sowing festival called Lunai Ni. A festive mood prevailed in Ukhrul district of Manipur as people wearing exotic headgears, traditional costumes and ethnic ornaments celebrated Lunai Ni festival, one of the biggest festivals of the Nagas. Sowing in tears, reaping in joy was the theme of the two-day seed sowing festival organized by the United Naga Council, Manipur. On the occasion, the god of crops is invoked to shower his blessings on seeds so that the farmers get a bumper harvest. Another attraction of the event was the blowing of horns by the elders. We need to protect and preserve our rich culture heritage, which will not only uphold our Naga identity, but this itself will create a new tourist destination. Naga folk dances like the war dance, weaving dance and the seed sowing dance were also organized. Vanya Chawang, a singer from Tamenglong, mesmerized the audience with her melodious voice. Love the broken one, the ones a little touching now. See the diamonds in her eyes, see the diamonds in her eyes. It is seed sowing festival. It shows togetherness, loveliness, sacrifice spirit, each other, eating, giving, eating, drinking each other, interact each other. Yeah, I like this festival because this festival brings together all the Nagas people and we have the feeling of oneness. Without shoes upon my feet, surely feel the last time the bread I had to eat. I would sing out the Savior. In Manipur, festivals are the symbols of their cultural, social and religious aspirations, which help beat monotony of life by providing mental recreation and an emotional outlet. Between your heart and mine, love can build a bridge. मसी अखोई तसेंगना असिगुम्बा अखोई ओल नागागी सिगुम्बा लाइनी सिदा कुमसी 2016 की ओइना लाकपिरिबा मयाम असिसु अखोईगी कुमसीगी लाइबा अफबा असिगुम्बा लुंगाइनी सिदा अखोईगी सही अमगी सागदबा सोन पीबा को असिगुम्बा अखोईगी मरु मरांग हाइब तारे मसी अखोइना प्रकृति सिदा अखोइनु खंजबा कांदा. The seed sowing festival of Lunai Ni is the best festival of the Nagas living in Manipur that reflects India's rich cultural heritage. India is a land of spirituality where people of multiple faiths respect each other's beliefs
Recently, the Urs of Nizamuddin Aulia was observed in New Delhi by people of all faiths with traditional fervor. The Urs of Nizamuddin Aulia, also known as Hazrat Nizamuddin, at Nizamuddin Dargah is one of the biggest religious fairs observed in New Delhi. It was the 712th Urs of Sufi saint, attended by thousands of devotees who come from different parts of the country to pay their respects to the noble soul and seek his blessings. वही आता है जिसको सरकार बुलाते हैं। अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से, अपने रसूख से हाजिरी नहीं दे सकता। जिसे ये चाहते हैं उसी की हाजिरी होती है। बहुत प्यारा शेर है, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वो लोग खुशकिस्मत हैं जो इस आस्थान महबूब इलाही में हाजिर देते हैं और अपनी दिल की मुरादें पाते हैं। मगर एक हुजूम है जो चला आता है और बामुराद होकर यहाँ से जाता है। इस मौके पर मैं दुआ गो हूँ कि पूरी दुनिया में अल्लाह ताला अमन पैदा फरमाए और लोग भाई भाई बन के रहें। इस दौर में इन बुजुर्गान दीन की तालीमात को फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग इनकी तालीमात पर अमल करेंगे तो पूरी दुनिया में अमन ही अमन रहेगा, दहशतगर्दी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। Hazrat Nizamuddin was a revered Sufi saint who believed in drawing close to God through renunciation of the world and service to humanity. For him, his love of God implied love for humanity, and vision of the world was marked by a highly evolved sense of secularity and kindness. और ख़ास और आम, ये नहीं है कि सिर्फ ख़ास लोग आते हैं। यहाँ ख़ास और आम, औरत और मर्द, हर दीन के, हर मज़हब के, हर नेशनलिटी के लोग आते हैं। अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, यूरोप के लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ से तालीमात और फैज़ हासिल करके वहाँ पर ले जाके भी यही पैगाम देते हैं जो सूफियों का और जो मशाइखों का चिश्तिया सिलसिले के हैं, उन्हीं का ये पैगाम है। तमाम मज़ाहिब के लोग आते थे और फैज़ हासिल करते थे। अब भी वही रौनक देखेंगे आप। दरगाह शरीफ जाएंगे तो तमाम मज़ाहिब के आपको लोग मिलेंगे और एक रूहानियत की बारिश होती है। वो तो बरकरार रहती है, 12 महीने हर वक्त रूहानियत की बारिश होती रहती है अल्लाह वालों के मज़ारों पे। लेकिन ये जो विसाल का जो दिन होता है, जिसको मैं अभी अर्ज़ कर रहा था, उर्स का दिन होता है, इसमें ख़ास रूहानियत की बारिश होती है। People offered silent prayers in memory of the saint and paid obeisance to him. बेहद खुशकिस्मती है ये तो, यहाँ आना, यहाँ आके इबादत है, क़वाली सुनना, बैठना, मतलब एक महफ़िल समा है, हज़रत महबूब इलाही की शान में कही गई बातें सुनना, उससे बड़ा तो अक़ीदत कुछ, उससे बड़ी तो इबादत कुछ नहीं है एक सूफ़ी के लिए, क्योंकि हम सूफ़ी हैं, दिल से मानते हैं। तो ये ठंड और बारिश और ये सब चीज़ें कभी कोई मायने नहीं रखती। ये चीज़ हमारे लिए ज़िंदगी में सबसे ऊपर है और हर तरह से रहेगी, अक़ीदत है। Later, religious qawwali in the memory of the saint was offered to mark the occasion. Qawwali is a form of Sufi devotional music which is performed mainly at Sufi shrines or dargahs throughout South Asia. It is one of the musical traditions that stretch back for more than 700 years. With initiatives like Make in India and Digital India, the Indian economy is on a robust growth trajectory. A lot of emphasis has been given to boost the country's economy. Let's look at some recent developments. Under the Pehel scheme,
$4,109 million have been transferred directly to the bank account of liquefied petroleum gas consumers under the Direct Benefit Transfer for LPG or DBTL. The scheme has made it to the Guinness Book of World Records as the world's largest cash transfer program. Under this scheme, consumers get the cylinders at market price and then receive LPG subsidy directly in their bank account. The subsidy saved from Prime Minister Narendra Modi's Give It Up campaign is being utilized for providing new connections to below poverty line families. This enables the provision of LPG, a clean fuel, to poor households by replacing the conventional fuels such as kerosene, coal, fuel wood and cow dung. An Indian handset manufacturer, Ringing Bells, launched the world's cheapest 3G smartphone at just Rs 251, less than $4, in a move to disrupt the surging smartphone market in India, which recently became the world's second largest market after China, surpassing the US. Drawing its name from its humble price, the smartphone is called Freedom 251. It is in line with the Indian government's Make in India initiative. The smartphone will only be available online initially, which will help the firm cut costs and maintain the price. Karnataka has some of the best international and domestic technology companies which are creating millions of jobs. Investments worth over $66 billion were committed in the recently concluded Karnataka Global Investors Meet. Business Watch takes a look. The fourth edition of Karnataka Global Investors Meet 2016, which was held in Bangalore, concluded with over 1,000 approved projects and investment commitments of over $66 billion. The major sectors where MOUs were signed included energy, steel, chemicals, IT and food processing. An additional investment of $22.05 billion was committed by the Center for the Development of Roads, Ports and other mega projects in Karnataka. Given its natural advantage, given its first-rate human resource, given the natural technology inclination of entrepreneurs in Karnataka, who have already put this city and the state on the world map, Karnataka has to grow at least 2 to 3% ahead of India's GDP. Karnataka has that capacity, and I think it is that capacity which we have to fully realize through the potential of this investors meet and the people who are going to bring in investment. Host city of the Global Investors Meet Bangalore is home to some of the best international and domestic IT companies, which are creating millions of jobs for young engineers from across the country. With around 1,000 companies offering back office and outsourcing services, the industry here generates more than $17 billion revenue in a year. So I've developed a business in the UK and I'm looking to bring this business to India now, and Bangalore is such an exciting place to be at the moment, and I've got no doubt at all that within 5 years Bangalore is going to be a leading city, not for outsourcing but for startups. I mean, the energy here is incredible. And the IT sector here is incredible. So I was here 8 years ago, and in Bangalore 8 years ago, I had a sense it was a big IT city, but I think generally the level of IT felt like it was kind of a bit half-baked overall. But now, 8 years later, it's world-class. So. The Global Investors Meet 2016 was attended by 5,000 participants, including 1,000 from overseas. Corporate honchos, industrialists and international dignitaries unanimously lauded India's efforts in making India as a business-friendly country. As an Indian businessman, I am delighted to see that India's time has come, that India is starting to be recognized as a place to invest, as a market that counts, a place that has skills and growing infrastructure. India has a great deal to offer. It has a huge market. It has considerable skills and capital to be availed of.
the world is getting to be more integrated, and the future of India will depend on the future of investments. Indian government promotes initiatives like these, which help in attracting investments from around the world and boost India's prospects as the best destination for investments and doing business. A walk of hope that will cover 7,500 kilometers for peace and harmony was flagged off in Kanyakumari, the southernmost point in India, and will conclude in the northern state of Jammu and Kashmir. We bring you the details from Aligarh city, where a seminar was held when the walk reached Uttar Pradesh. Holding placards and banners, people from different communities walked silently to promote peace and send a message of unity across the country. They have covered a distance of 5,800 kilometers and still have to cover 2,000 kilometers to reach the final destination. The march is scheduled to commence in Kashmir in May this year. With the theme, A Walk of Hope, rally filled with hope displays a sense of togetherness, love and brotherhood. जैसा हमारा रिस्पॉन्स हमको मिला है, मुझे लगता है कि ये मैसेज लोगों के अंदर थोड़ा कुछ फैला है, मगर ये आशा यात्रा है, इसलिए पूरे होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि आशा हमारी पूरी हुई कि नहीं। तो अब तक का रिस्पॉन्स देख के हमें लगता है कि कुछ तो है मूवमेंट इसके अंदर। ये तो ऐसे हम अकेले तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो खाली बीज बो रहे हैं, मानव एकता, शांति और सद्भावना। अब बीज बोते ही पेड़ नहीं बन जाता है, समय लगता है। तो इसलिए हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जाते हैं, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी हैं, इनके हृदय में अगर ये बीज हम बो दें तो भविष्य में इस भारत को एकता मिलेगी और हम सब मिलकर रह सकते हैं। From Kanyakumari to Kashmir. After passing through different states, the Peace March reached Aligarh Muslim University, where the institution authorities organized a seminar to encourage it. Eminent speakers delivered speeches on humanity, togetherness and peace on the occasion. बहुत तब्दीली आएगी, लोगों के दिमाग में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और ये जो हमने सेंटर खोला है फॉर इंटरफेथ डायलॉग, इसकी ऐसे मूवमेंट्स और ऐसे उससे बातें शुरू होंगी, लड़ाई कम होगी। आगे किस तरह के आयोजन होंगे सर इस सेंटर के तहत? देखिए, ऐसे ही सेंटर्स में हम इनकरेज ये करेंगे कि एक दूसरे के साथ बात हो, एक दूसरे के साथ प्रेम हो, एक दूसरे के साथ प्यार हो और लड़ाई झगड़े बंद। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई इंसान अच्छा, उसके दिल में भी कोई अच्छी भावना आती है, सोच आती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर ज़रूर पड़ता है। असर देर में पड़े, कम पड़े, ज़्यादा पड़े, ये तो एक अलग बात है। मगर हर अच्छे आदमी से मिलकर कभी भी किसी जगह अगर आप किसी अच्छे आदमी के विचार सुनेंगे, उसके साथ बैठ भी जाएंगे, सिर्फ देखते भी रहेंगे, तो असर तो कुछ ना कुछ ज़रूर पड़ता है। The march has to cover a total distance of 7,500 kilometers to reach the northern state of Kashmir. It also supports interfaith harmony and equality for all, sustainable living, women empowerment, community health, education, and youth development. The demand for projectors is on a rising curve due to strong buying in various sectors like education, government, cinema, and corporate. Companies from across the globe are launching high-end projectors to meet the consumers' needs. With IT infrastructure spending becoming an essential part of every business budget, projectors are on their way to become integral to any organization all over the world, including India. The world's fastest growing audiovisuals and systems integration trade show, ISE, or Integrated Systems Europe 2016, saw several professional audiovisual, electronic systems integration and IT industries. Casio Computer showcased the first laser and LED light source projectors.
歌唱として2010年に初めて世界に初めてランプ光源を使わないすべてレーザーと LED でプロジェクターを実現した会社です。Unlike the mercury lamp projectors, the Casio laser and LED light source has many benefits. It has a lifespan of up to 20,000 hours, eliminating the need for lamp replacement and reduces electricity consumption to about half that of a mercury lamp projector. レーザーと LED を使用し、ハイブリッドなシステムを作っております。青色のレーザーを蛍光体に当てることにより緑の色を作っています。で、赤色は LED 光源の赤を使った色をそのまま使って、RGB を作っております。防塵構造はですね、このような3ブロックの構造にしております。私たちのプロジェクターはすべて我が山形発祥で生産しております。Another technology which Japan has introduced is the water-saving toilets. From the pit toilet to water flush toilet, bidet and to water-saving type, Japanese sanitary ware manufacturer Toto has evolved its technology with the aim of clean and comfortable use of toilet. ウォシュレットと節水型便器が一体のものとなっておりまして、こちらちょっと一回流してみますね。このように上の方からですね、力強く渦を巻いて流すトルネード洗浄と、このトルネードを使いまして最後まで力強く流し切ります。便器の内側の部分にはセフィオンテクト加工というものを施しておりまして、実際汚れはですねつきにくく、落としやすいような加工がしてございます。洗浄水量 3.8 リットルを実現しております。By spreading awareness about water preservation, it will help conserve the global environment. This week in our food section, we take you to Rajkot city of Gujarat to explore the yummy peanut brittle chikki, which is the perfect snack to gorge on in winters. Chikki in Rajkot district of Gujarat is very popular across the country. As shop shelves in the city are filled with the tasty peanut bars made with jaggery. Traditional delicious peanut candy in Rajkot is an addictive snack eaten by people of all ages, especially in winters to keep the body warm. हम जो चिक्की बनाते हैं उसमें प्योर जेगरी तो हम जेगरी डालते हैं और जो इसमें अंदर पीनट्स है, सीसम है, ड्राई फ्रूट्स है, जो भी है वो बढ़िया क्वालिटी के इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात कि हमारा जो राजकोट का चिक्की बनाने का तरीका है वो अदर स्टेट से अलग है। और हम 1962 से चिक्की बनाते हैं, लेकिन जो हमारा बनाने का तरीका है हाइजेनिक प्लांट में बनाने का है। Chikki is always a better option because it is free of preservatives, coloring and flavoring. It is a traditional ready-to-eat Indian sweet generally made from groundnuts and jaggery. Some of the ingredients used in the making of chikki include peanuts, jaggery, water, greasing ghee. मैं तो बॉम्बे से आता हूँ। हमारा यहाँ घर है राजकोट में, लेकिन हर साल आज पिछले 20 साल से हम लोग यहाँ चिक्की लेते हैं। स्पेशली इनकी तल की चिक्की, चने की दाल की चिक्की और सिंगदाना की चिक्की, सब अलग अलग वैरायटी से काफ़ी मिलती है। और संक्रांत में स्पेशली हम लोग यहाँ पे हमारे जो मित्र है, फ्रेंड्स है वहाँ बॉम्बे में, उनके लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे इन-लॉज के लिए, सबके लिए हम लोग यहाँ से चिक्की लेके जाते हैं। डेफिनेटली राजकोट की चिक्की इज़ वेरी फेमस। और ये इनकी जो ब्रांड है, ये ब्रांड के लिए तो मतलब मैं कहीं से भी, मेरे घर के बाजू में वहीं से भी नहीं लेता हूँ और इसी शॉप से लेता हूँ हर टाइम। Chikki is a sweet prepared by mixing various types of nuts and other ingredients either with jaggery or sugar. These ingredients are mixed with thick syrup made of jaggery or sugar in a large heavy bottomed pan. After rolling the mixture flat with a rolling pin, it is then cut into smaller vertical or horizontal pieces. When the pieces are cool, the workers break and collect them all for storage or pack it to make them available in the market. अभी ठंडी की वजह से ग्राहक की ऐसी निकली हुई है और मूंगफली की क्रश वाले सिंग की चिक्की हमने इस साल नहीं निकाली हुई है, जो हेल्थ कॉन्शियस है उसके अंदर कम गुड़ रहता है। इसके साथ हम 40-45 और वैरायटी बनाते हैं जो ठंडी के मौसम में अंदर रेगुलर चलती है।
Groundnut chicky is great for health as both protein and iron are found in it in an adequate quantity. That's all we have for you this week. Your comments and suggestions are important to us. Do give us your feedback at myindia@nin.com. In the next episode, we will come up with some more latest news about India's diversity and its economy. Signing off with a look at the Kila Raipur festival held in Ludhiana city of the northern state of Punjab. ਪੰਜ ਪੀਰ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡੋ ਪੰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ Bye.